चलिए जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ईट स्लीप ड्रिंक क्रिकेट। बड़े दिन हो गए। भास्कर को टाई वाई लगा के हुए या मैं और अभिजीत तो घर के टी शर्ट में ही आ गए हैं। बस मैंने लेकिन ये टोपी लगाया अपना टू इंश्योर कि आई लुक बड़ी स्मार्ट। अभिजीत आप भी लगा सकते हैं, आपकी खोपड़ी आप यू कैन सेव एंड टेक केयर ऑफ योर खोपड़ी। लेकिन ये मिस्टर रिची बेनार्ड जब बार बार ब्लेजर वेजर में आ रहे हैं, क्या ही बात है यार, मतलब अजब है। इवन अजित अगरकर भी ऐसा नहीं आ रहा। चलो एनीवेज आई इंट्रोड्यूस द थ्री टॉपिक्स फॉर द डे। मेरे मतलब घटिया जोक्स के बाद आई इंट्रोड्यूस द टॉपिक्स। तीन टॉपिक है। पहला टॉपिक तो है चैंपियंस ट्रॉफी सिलेक्शन का। अगर उससे वक्त मिले तो भास्कर हमें बात करने का टाइम दे। जो उन्होंने व्हाट्सएप में जो हंगामा मचा रखा है, उससे टाइम मिले तो हम वो 10 डिक्टेट्स जो इन लोगों ने बीसीसीआई ने ऑर्डर किया उसके बारे में बात करेंगे। और थर्ड एंड लास्ट कि ऑफलाइन न्यूज बहुत ज्यादा आ रहा है। तो वो एक्चुअली मैं अमित रानडे वो काफी उनके पास खबर रहता है तो उनसे बात करने का सोच रहा था। तो अगर वो टाइम मिले तो विल सी दैट, क्योंकि एनीवेज हम लोग यू नो अस ना, वी ऑल डू नॉट ऑफलाइन न्यूज को हम इतना तवज्जो नहीं देते। बट इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कुछ जरूरत से ज्यादा आ रहा है इस बार, इसलिए। एनीवे सो विल स्टार्ट विद चैंपियंस ट्रॉफी। सो सर चैंपियंस ट्रॉफी का तो ऐसा है कि कल सो द टू थिंग्स हियर। What happened is these guys said that they're going to address a press conference at 12:30, and they called all the media, and the media was in full flow क्योंकि अभी तक जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे थे सब ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। अब फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बड़ा ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वो हुआ इंडिया में बॉम्बे में। तो सारे आगे ओबरा होटल सारे जमा हो गए, एंड ये बाहर आए ही नहीं। डिस्कस करते गए करते गए करते गए करते गए, एंड देन फाइनली दे अराउंड 3 o'clock they came. So media obviously got a bit irritated, and जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर उन्होंने बहुत ही छोटा ही किया, बट बिकॉज probably that irritation they really smashed out Rohit Sharma and Ajit Agarkar. So the list is out, and Bhaskar, I'm just going to pull it off and I'll put it on the screen. But you can start off Bhaskar ki how do you see that? How do you see किस तरीके से ये हुआ है? And maybe you can take it on from here. I mean, गुस्से में आप म्यूट पे ही बात करे जा रहे हो आप। ओके। ठीक है। सो जो टीम हमने देखा है वो मोर और लेस ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस है। ज़्यादा कुछ सरप्राइज नहीं है। एक ही सरप्राइज है जो आई थिंक मोहम्मद सिराज मिसिंग आउट। I think if they had kept probably Washington Sundar out and Mohammad Siraj had played, I think that would have been a team which all of us would have exactly expected and with no surprises, no hard decisions taken. So I think they have, I think, gone ahead with because Shami and Bumrah uh, available. I think Siraj they have kept out because most likely if they were all available, Siraj wouldn't have played in any case. So I think, and of course they can make changes. Harshit Rana is there as the backup, but Siraj can also come in if at all some major mishap happens, or if Bumrah is not able to play through the tournament. So I think, but for that, more or less, very on very expected lines. Nothing uh, really drastically different. We would have probably seen maybe like Karun Nair had an outside chance, or maybe uh, there was a chance that what do you call Varun Chakravarti would have gotten in place of Ravindra Jadeja, but they have stuck to the tried and tested. We are a wonderful team. We've been brilliant over the last uh, 13, 14 years. We won the 2011 World Cup. We won the Champions Trophy in 2013. We went unbeaten to the semi-finals of the 2015 World Cup where we lost to Australia. We went unbeaten to the 2017 World Cup, sorry, Champions Trophy final where we lost to Pakistan. 2019, we were the team that we just lost one match to England till we lost the semi-finals. And to 2023, I think we just dominated till we lost the final. So if you see one day cricket, we have been very well, like we've done brilliantly over the last 10, 13 years. So there's no need to make any drastic changes. Of course, test failures, what happened over the last 3 months would have been playing on the mind of the selectors. But for that, I don't see that there was any need for any knee-jerk reactions. I think this is a solid team. I think we have every chance of ending the 50 over title drought, which has been there since 2013. Of course, we ended the ICC Trophy drought last year with winning the
T20 World Cup. I think we have every chance to go all the way. Rajiv. ओके सो नहीं गुड है, अब बात तो सही है, लेकिन एक चीज था, 2019 वर्ल्ड कप में एक मैच हम इंग्लैंड के साथ हारे थे। वही बोला था मैंने, एक वी जस्ट लॉस्ट वन मैच टू सो इंग्लैंड ट्वेंटी एंड सेवन अगेंस्ट. सॉरी 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका के साथ एक मैच हारे, जहाँ पे कुशल मेंडिस वाज द मैन ऑफ द मैच। ओके ओके फाइन. ऐसा नहीं है, मुझे भी आपसे ज्यादा पता है कभी कभी। एनीवेज मैं गलती पकड़ने के लिए बैठा था मैं। गुड गुड. एनीवेज आई एम ग्लैड. आई एम या अच्छी बात है, अच्छी बात है. आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने गलती पकड़ा मेरा. नहीं, 21st सेंचुरी में मुझे ज्यादा याद है। नहीं हम्म. एनीवेज सो कहना यह है कि अभिजीत, मैं आपको, आई एम जस्ट ड्राइंग हियर, सो देर आर टू सेट्स ऑफ प्लेयर्स आई एम इंडिकेटिंग यू टू, ठीक है? सो द हम्म. फर्स्ट सेट ऑफ प्लेयर इज सिराज. Siraj is one. Second is Shami. No, sorry, Jasprit Bumrah. So the first list is Jasprit Bumrah, Kuldeep Yadav, Mohammad Shami. This is an injury prone list. ये एक तीन है जो अभी लिस्ट में है, बट वो एक इंजुरी प्रोन लिस्ट है. द नेक्स्ट लिस्ट इज सिराज, करुण नायर एंड संजू सैमसन, ठीक है? सो आई विल कम टू द फर्स्ट लिस्ट. फर्स्ट लिस्ट ये है कि वो इंजर्ड है. सो दे आर प्लेइंग दीज थ्री इंजर्ड प्लेयर्स. सो आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज दे वुड अनाउंस. अभी तक उन्होंने सिर्फ ये बोला कि बुमराह की जगह हर्षित राणा आएगा, विच मीन दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि शमी और कुलदीप खेलेंगे करके. बट एनीवेज अगर कुछ है इशू तो पता चल जाएगा एंड दे विल गेट दी प्लेयर्स, आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है, मुझे वहां नहीं दिख रहा. बट थ्री प्लेयर्स whom वी हैव टू डिस्कस इज, एक है सिराज, एक है संजू सैमसन और एक है करुण नायर. नाउ सिराज शुड हैव आइडियली, अकॉर्डिंग टू मी, शुड हैव आइडियली कम इन द स्क्वाड बिकॉज आपके पास पेसर्स ही तीन ही है, जिसमें आप इंजरी दो कैंडिडेट्स लेके बैठे हैं. सेकेंड इज संजू सैमसन का जो है, हिज record in white ball cricket has been outstanding, but this record is made in the last 7 8 ODI matches. 23 से जो खेला है थोड़ा बहुत उसमें बना है, एंड T20 में अच्छा है. करुण नायर का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि फिर आप कैसे अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को, हाउ आर यू रिवॉर्डिंग देम? किसी एक को तो रिवॉर्ड करना पड़ेगा. एंड आई एम नॉट सेइंग करुण नायर, मयंक अग्रवाल हैज आल्सो डन वेरी वेल इन विजय हजारे, एंड देन दिस गाय ध्रुव शोरी फ्रॉम द सेम टीम विदर्भा, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, तीनों में सेंचुरी मारा है वो, ठीक है? तो ऐसा नहीं, मतलब तीन चार प्लेयर हैं जो विजय हजारे में. करुण नायर खिल के आया, मतलब उसने एवरेज भी सॉलिड है, स्ट्राइक रेट भी सॉलिड है, मैच बना के दिया है, चेस करके दिया है, सब कुछ करके दिया है. सो उसका नाम भी आ रहा है. सो टेक इट ऑन फ्रॉम हियर, व्हाट इज योर टेक ऑन ऑल दिस थिंग्स? सो आई थिंक द टीम, जब मैं टीम का ये देखता हूँ ना, तो आई थिंक इसको मैं थोड़ा लेबल करूंगा एज द ईगो टीम. ये रोहित शर्मा एंड अगरकर ने बोला कि बॉस वी डिड वेरी वेल इन 2023 वर्ल्ड कप, which is actually true, although it was a home tournament, so you are minimum expected to reach the semi-final. So actually 2023 world cup का भी जो achievement है, I don't really consider a grand one, because if we were a home team, anything less than a semi-final is a disaster. Even semi-final in 1996 was considered a disaster. So reaching the final means we did good, okay, but then in the final we weren't that great. So Rohit Sharma and co decided the boss, हम इसी team लेके will prove, and with the same set of stars who have got vilified over the last 3 months after the New Zealand Test Series and the Australia Test Series, हम इन्हीं को लेके ही prove करेंगे कि boss we are the gang, original OG, original gangsters, and we will win. So when I look at this lineup, it is in fact based on this list जो आपने अभी भेजा है, the starting 11 looks to me the same starting 11 जो 2023 वर्ल्ड कप खेला है, with सिराज माइनस होगा, वाशिंगटन सुंदर खेलेगा, which means रोहित शर्मा. आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? आर यू एबल टू सी द? Yeah, I can see. Yeah. I can see it. So basically, Rohit Sharma gill opening, Virat Kohli one down, Shreyas Iyer next, KL Rahul, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, उसके बाद Washington Sundar, and then Kuldeep, Bumrah and Shami. That's the same, or virtually the same 11 जो World Cup 2023 खेला. You are absolutely right. Okay, now we come to the point of domestic. ये domestic वाली बात सब आई है after we lost 5 test matches, 3 versus New Zealand and 2 versus Australia. And suddenly this thing has come up, domestic. But the matter of fact is, हमारा हमेशा selection has not been on domestic. It has been more towards IPL. हमारा IPL का जो IPL से हमारे stars आते हैं, वहां से हम gradually reward करते हैं. हर्षित राणा domestic performance की वजह से नहीं आया टीम में, वो IPL में he was seen. After that, gradually he started coming in.
So I mean that has been our history so far, so of the recent history. And if you really want to stress on domestic, then I want to know मोहम्मद शामी ने ऐसा क्या किया domestic में कि वो injured था पिछले 2.5 साल से करीब, and then you straight away comes and he'll play in the 11. So Kuldeep Yadav also hasn't bowled for some time now, or I don't know if he's playing recently or not. So there is this X factor with these three people that whether they are going to be injured or they are going to play or not. Mohammad Siraj exclusion is unfortunate because I checked out the list because I had an idea he has a very good strike rate. Of all the modern ODI bowlers, Siraj will probably be in the top 6 or top 7 best strike rates in the world. So Siraj's dropping is a bit unfortunate, but I'm guessing if Bumrah is injured or something, Siraj will come back. Karun I'm not considering at all because Karun Nair may have scored in domestic, but we didn't see him do anything over the last 2 years in IPL IPL or ODI or T20 जो कि actually हमारे steps है to success. Apart from media ने खुद बनाया होगा तो अलग बात है. Nowhere was he going. I mean, he is not a Yashasvi Jaiswal जिसने कभी ODI नहीं खेला, जिसको out of the blue, not out of the blue really, जिसको लेके हम Champions Trophy squad में लेके गए. I mean, Karun Nair versus Yashasvi Jaiswal is a right comparison. दोनों ने ODI नहीं खेला है, and Karun Nair को किस बेसिस पे लोगे? यशस्वी जायसवाल को लेने के बहुत सारे बेसिस हैं. But the players I thought could make the cut. One was Sanju Samson. Definitely, I thought he was a guy who could have replaced been instead of Rishabh Pant. He gives an X factor also. Then there was this guy Rinku Singh. I mean, Rinku Singh is the guy I wanted in the 2023 World Cup squad. I don't know why he was not taken there. And if we are not taking him now, then it's not the right thing. He's an excellent fielder. He's an innings builder. He has a great first class. तो आपको अगर फर्स्ट क्लास वाला कोई कहानी लेना है ना तो डोमेस्टिक प्लस आईपीएल सक्सेस वाज रिंकू सिंह प्लस ही इज अ लेफ्ट हैंडर हु वुड हैव बीन बिकॉज़ हमारे जो टॉप 4 है दे आर वेरी राइट हैंडर है. शर्मा, गिल, कोहली, अय्यर आर वेरी राइट हैंडर है. वहां एक लेफ्ट हैंडर होना जरूरी था. सो आई थिंक दैट those were the names I thought. And outside was Tilak, who did very well in T20s, but again he did well in T20s. उनका कोई ODI का we don't know how much but again he's also a good bet for the future. So yeah, this is what I feel. Ultimately, we have picked up team which is a star-studded team. I don't think Hardik Pandya's demotion was it was a wrong move, to demote Hardik Pandya. And from nowhere, I'll come to that. I'll come to that topic. Yeah. And from nowhere, Shubman Gill became the vice captain. So this clearly looks as a team which Agarkar and Rohit Sharma are strongly backing. कि बस तुमने जिन stars को गाली दिया है वही stars हमारे deliver करेंगे, वही stars will do very well. Now, the last point is Dubai is not really a happy hunting ground for us. Okay, over the last 4-5 decades, Sharjah में तो हमारी कितने heartbreaks हुए हैं. Me, you and Bhaski share very well. We didn't have a great ODI T20 World Cup in Dubai. I think in the year 2020 or 2021, जब भी हुआ था. So Dubai isn't a great hunting ground for us. So let's hope we change things this time around. हमारा पहला मैच है अगेंस्ट बांग्लादेश. अगर बांग्लादेश आप हारते हो तो आपको उस टूर्नामेंट पे रहने की अरे आएंगे सर सब पे बात करेंगे. आप ही मतलब पूरा ही बात करेंगे तो कैसा रहेगा? शेड्यूल है वैसे स्क्रीन पे डाल दिया है. Yeah, I'm done, Rajiv. Okay, so anyways, I'll give you my perspective. तो मुझे कोई इशू नहीं था. एक चीज था, संजू सैमसन डिजर्व टू बी इन द स्क्वाड मोर देन एनीबॉडी एल्स, क्योंकि उस बंदे ने साउथ अफ्रीका में सेंचुरी बनाया. ही इज बीन इन द वाइट बॉल स्कीम ऑफ थिंग्स. सडनली उसको ड्रॉप करना मेरी समझ के बाहर है. ऋषभ पंत वाज डूइंग सो. इन डिफेंस ऑफ ऋषभ पंत आई ओनली से वन थिंग, दैट बिफोर ही वाज इंजर्ड एंड ही वेंट बैक, देयर वाज अ सीरीज इन इंग्लैंड आल्सो जो हुआ था जिसमें उसने एक 100 बनाया था. एंड रोहित शर्मा हैड told मतलब कि ऋषभ अब से तू मैच फिनिश करेगा. And there were a couple of 70s also he got there and all this stuff. One century in England, he finished the game for India and so ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन recent form ठीक नहीं लग रहा in white ball cricket for ऋषभ पंत. But he's a star player. उसको पता है, बहुत दिन से खेल रहा, तो I think he won't, there should not be any problem, especially in ODI cricket. Second, आपने जैसे बोला लेफ्ट हैंडर है इसलिए उसको लेके आ रहे हैं. करुण नायर, आई ऑल्सो अग्री. सी करुण नायर अगर ये कोई बायलैटरल सीरीज होता था ना, आई थिंक करुण नायर आराम से आ जाता था इस स्क्वाड में. लेकिन बिकॉज दे हैव टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी एंड देन अनदर ओडीआई सीरीज इज नॉट गोइंग टू हैपन वेरी दिस थिंग. सो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स से ही बेटर होता है आप एक आईसीसी टूर्नामेंट में जाते हो. सो आई थिंक आई अनफॉर्चुनेट फॉर करुण नायर, बट ही शुड प्ले वेल because probably you never know he can come into the test squad if he plays well in white ball cricket. सेकंड, आपका जो रिंकू सिंह का था, रिंकू सिंह 1 year बैक वाज डूइंग वेरी वेल, अभी भी अच्छा ही कर रहा है.
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको 24 वर्ल्ड कप में नहीं लिया था, ही वॉज इन द स्टैंड बाई। तो जो T20 स्टैंड बाई में था, T20 में स्टैंड बाई में था, उसको ओडीआई में लेके आएगा थोड़ा। आई डोंट थिंक ही वाज इवन इन द रेकनिंग। इनफैक्ट शुभम शिवम दुबे वाज इन द मोर इन रेकनिंग बिकॉज ही प्लेड इन श्रीलंका ऑल्सो। सो है मतलब वन वन पॉइंट विच अगरकर मेड yesterday, I totally agree, is that only 15 players can be selected. What should we do? But I totally, one thing is Siraj should have been selected because आप बॉलर शॉर्ट हो, सीधी बात है, आप एक फास्ट बॉलर शॉट हो। एंड मतलब कल, एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि बुमराह अगर इंजोर हो जाएगा तो हर्षित राणा आएगा, तो सिराज क्यों नहीं आएगा भाई? तो ये थोड़ा सा मतलब दिस इज द होल पॉइंट। बट एनीवेज आई थिंक हमेशा सिलेक्शन जब 14-15 होता है, एक दो से सारे ही खफा रहते हैं, तो कोई तो अभी मतलब हरभजन सिंह वो सिंह जायसवाल शुड बी इन द 11। कौन सा 11 में आएगा वो? मुझे नहीं समझ में आ रहा। सो मतलब क्या ही बोले, मतलब एवरीबडी विल हैव देयर ओपिनियन, सो इट्स टफ टू से एनीथिंग। But one good thing which has happened is this same squad is going to play for the three ODIs against England. So पता चल जाएगा कि टीम का बैलेंस कैसे होने वाला है। So I think that was the right decision which was taken कि क्या करना है करके। Now second point, now the Gill thing which I'm bringing in, and I'll get Bhaskar into it this one. See, generally मैं तो वाइस कैप्टनसी को कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मानता, क्योंकि वाइस कैप्टन होता है, कैप्टन कोई और ही बनता है, मतलब ऐसा कोई ये नहीं है। बट व्हाट इज हैपेंड हियर इज दैट देयर इज अ मैसेजिंग गोइंग। जैसे अक्षर पटेल को भी एक मैसेजिंग का कि तू है, और हार्दिक डिमोट हुआ ओडीआई में भी, हार्दिक डिमोट हुआ और गिल को लेके आए हैं। एंड सो देयर इज समथिंग विच इज जो सेट नहीं हो रहा है। गिल एज अ वाइस कैप्टन मतलब मेरे लिए तो इट डजेंट वर्क फॉर मी, क्योंकि फिर आप कह रहे हो कि आप जायसवाल को खिलाओगे नहीं अंटिल समथिंग समथिंग रियली ड्रास्टिक डजंट हैपन। एंड दैट्स द प्रॉब्लम आई हैव। कल को आपको लेफ्ट हैंडर की जरूरत पड़ी तो आप क्या कर लोगे? गिल को ड्रॉप करोगे क्या? यू आर सेइंग दैट ही इज पार्ट ऑफ द लीडरशिप टीम, राइट? सो भास्कर, आई स्टार्ट विथ यू, हाउ डू यू सी दिस एंटायर मोनोपोली? Rajiv, I think you're still sharing the screen when we're not discussing the screen right now, no? So you can probably stop sharing the screen right now. Yeah. Uh, See, Gill vice captaincy, there's a reason behind it because he has no other responsibility. See, we have seen giving it to a fast bowler sometimes doesn't work because even though he's probably Bumrah is the best player in the world right now and the best bowler we have by some margin, isn't it? So the thing is, fast bowlers are always they tend to get injured, and that's the normal. Apart from say Bob Willis or Kapil Dev or Imran Khan, we've not had that many fast bowling captains. Of course, we had. Courtney Walsh for some time, and we've had Pat Cummins. But in the history of cricket, it says that usually it's the batsmen who've been the captains. Even before, I think, before Dhoni, we didn't have that many wicket-keeping captains there also. So I think that's why they're looking at the long haul and saying if Gill becomes the captain, it becomes easy because he would probably stay fit, play all the matches, and that's the only reason. He's been the vice captain a few times, and he has a very good ODI record. So I think that's the only reason they are looking at Gill as the vice captain right now. Because Rishabh Pant is surely like not sure of playing in the playing 11 with KL Rahul also there. So I think Gill, with his ODI record, probably walks into the team right now. In spite of all his struggles in Test cricket, he's probably one of the best ODI players we've had in the last 4 5 years. So I think that's one reason they are looking at Gill as a long term prospect. Because Shreyas Iyer again, though he has a good ODI record, he's in and out of the side, even in the other formats, and surely it's difficult, the conditions are difficult. Shreyas Iyer has had some problems facing the fast bowlers, so I think that's why they are looking at Gill because he gives them the flexibility of because he more likely more often than not he would be fit and be playing the ODI team. So he might get dropped from the Test team in the coming years with the way he's playing Test cricket. So I think that's why they are looking at Gill as the vice captain. Rajiv. Sorry, the question here was that, I mean, does Hardik Pandya deserve to be demoted? वो T20 से भी हट गया है, इससे भी Yeah. हट गया है, See, तो वो yeah, लीडरशिप रोल में ab- वो नहीं है अभी। हाँ, सी द थिंग इज T20 से इसलिए हटा क्योंकि उसका fitness lot of issues are there and that's or else he was a T20 captain, isn't it? There was no way he was going to because the way he captained Gujarat Titans twice, I think he was going to be the captain in T20 cricket, but उसका fitness issues के वजह से he's not like able to play the longer formats. ODI cricket it's very difficult because we saw in the World Cup he played a few games and then
then couldn't play, continue, he got injured. So I think that's why they are looking at Hardik Pandya. That see, once he was out of the T20 captaincy role, this was bound to happen in ODI cricket, isn't it? The reason he got demoted from the T20 captaincy role was because of his fitness issues. So ODI, now they have to look at the future, and we don't know how long can Rohit Sharma survive. Because if we lose the Champions Trophy, I don't think him surviving uh, till the 27 World Cup. But if he will win the Champions Trophy, you never know. Anything is possible. So I think I don't see much of a surprise there uh, in Gill becoming the vice captain in ODI cricket. Good point है. I mean, I have nothing against शुभमन गिल, but ये जो हार्दिक पांड्या हट गया है, ये थोड़ा सा I was not comfortable, but ठीक है. See, this is just this one-off tournament. उसके बाद again ODIs होने नहीं वाला है. ODIs फिर now will become Exactly. relevant only in 2027. क्या ही, Absolutely. क्योंकि उसके बाद जो अगर दो चार बायलैटरल भी बीच बीच में कभी आएगा, तो उसपे ये सारे नहीं खेलेंगे. ये देन योर नेक्स्ट नेक्स्ट जेन प्लेयर्स, और जिसको ट्राई करना वही आने वाला है. सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी बिग इशू हियर. ओडीआईज में तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि नहीं होने वाला है. सो अभिजीत, आप कैसे देखते हैं? मतलब यू बॉट दिस टॉपिक, सो No, actually, I think this looks like a demotion, and I think जितने डिटेल्स में आप लोगों ने सोचा है, कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई ओडीआई है नहीं फॉर द नेक्स्ट 2 years, जहां की यंगस्टर्स ही खेलेंगे, which is the absolute right thought. I'm not arguing that, but the fact is that there's something called messaging, and which is the topic which are going to come up. I think till we were winning that Bangladesh Test series, we were doing great. We were having a fabulous 2024. Lekin after this New Zealand series, the messaging has been poor. Agarkar suddenly sitting in Australia like a boss, and despite that, can't even prevent an Ashwin from staying the entire tour. The tremendous thing. And the other topic which are going to come up, the 10 headmaster wala jo diktats jo ekdam public mein aa gaya. I don't think they give the right message. And Hardik wala जैसे demotion हुआ, immediately the common man को उतना नहीं पता 26 में क्या कितना वनडे 27. कॉमन मैन यही सोचेगा कि हार्दिक पांड्या, रोहित, मुंबई इंडियंस प्रॉब्लम्स, ये वो देखो अभी बदला लिया ना. So it gives a very bad taste. It gives a very bad messaging. If vice captaincy is not that important, if it's just a one-off tournament, तो आपको क्या जाना था अगर हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन रह जाता? After all, he was one of the key guys. Why you won the T20 World Cup? Let him be vice captain for another 4-5 games. ऐसा नहीं कि शुभमन गिल वाइस कैप्टन बन के आपके लिए ताबड़तोड़ कुछ एक्सपीरियंस लेके आएगा 5 मैचेस में. But by depriving Hardik Pandya, you have needlessly started a controversy of a player who won you the last series. I mean, who won you that last World Cup. So I don't think that. And obviously the other point which you said, कि गिल को जब vice captain बना दिया, immediately जायसवाल खेलेगा कि नहीं is a question mark. So I see only one or green ticks, but 3-4 red ticks in this particular decision. Rajiv. But I was just pulling this thing. I'm unable to share that 10-point diktat, but I'm bringing this up now. There's a reason I want to discuss this 10-point diktat. Okay, तो मैं कल लेके आ रहा हूँ. We'll just see this one. So I'll start with what is happening here. एक मिनट. So इन्होंने कुछ लिखा है कि to establish guidelines and all those stuff, which is fine. मेरे हिसाब से तो गाइडलाइंस तो ठीक है यार, मतलब गाइडलाइंस होना ही चाहिए था. अब तक क्यों नहीं किया मेरी समझ में नहीं था. करना ही चाहिए था. But I'll bring 2-3 points here, okay? So because in interest of time, we'll take one topic at this thing. So we won't talk the same topic. So the first topic is participation in domestic matches. So Bhaskar, you can take it up. I think that's a fair point. The 10 Yeah, I think, see, the thing, participating in domestic matches, I've always felt there should be a window for that, because haphazard participation doesn't work. Because some team is playing, say, a Ranji Trophy, they've reached the quarterfinals with a certain team. Okay, some opening batsman has played all this while, and suddenly you ask that young opening batsman to make way for Rohit Sharma. I think it's also doesn't send a very good message for that particular player, isn't it? So I think participating in domestic matches has to be some kind of consistency, that these players would be added after a certain period of time, and then as a haphazard may, like, I'll play one quarter final again go and play international cricket. It doesn't work that way. See, Sachin came and played that one match against Haryana in Lali, but that was because it was his last game and it was a farewell, so that's fine. But this haphazard
international players coming in and playing a game or two and then going back. It doesn't work very well, in my opinion. So if you see in the early 90s or late 80s, you had Gavaskar, you had Kapil Dev. Gavaskar leading Mumbai, Kapil Dev leading Haryana. So it used to be a big matchup, isn't it? So if you have a small window for Ranji Trophy knockout stages where all international players are available, that would make more sense than just playing domestic cricket just for the sake of it. Of course, when somebody's dropped, they can go and play domestic cricket. Say Kohli gets dropped, he has time to play domestic cricket. But if he's there in the Indian team, it's very difficult to play domestic cricket because when they are in their off season, there's hardly any domestic cricket. The only domestic cricket they get to play is IPL. So I think that's where it becomes a bit of a mismatch in नहीं terms of सही what बोला we आप। expect and what we get. नहीं Rajiv. सही 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 बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एंड दैट्स व्हाई दैट वो जो दुलीप ट्रॉफी हुआ था ना, इंडिया A B C D जो बनाया था, दे Hmm. शुड हैव ऑल बीन आस्क्ड टू प्ले दैट। एंड वो इस साल में Hmm. एक बार करा और उसमें खेलने को बोलो, इट मेक्स अ Hmm. बिग डिफरेंस। तो ठीक है, मतलब दिस इज अ True. वेरी गुड पॉइंट, दैट विंडो होना चाहिए, वरना फायदा क्या है कि फिर रणजी प्लेयर वो जो बेचारा खेल रहा है उसको ड्रॉप होना पड़ेगा ना, उसकी क्या गलती है। सेकंड, आई एम कमिंग टू यू अभिजीत, आपके पास आ रहा हूँ। प्लेयर्स ट्रैवलिंग सेपरेटली विद फैमिलीज। अब इसमें दो तीन चीजें मगर हैं, इसमें दो तीन चीजें हैं। उसमें आ रहा है, एक तो आ रहा है आपका एक्सेस बैगेज, एक बात आ गया एक्सेस बैगेज का। दूसरा है रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल स्टाफ ऑन टूर सीरीज। मतलब ये, सो द होल पॉइंट इज कि ये अपने अपने चार्टर्ड फ्लाइट में घूमते हैं, ये टीम के साथ जाते नहीं है, फैमिलीज के साथ कहीं घूम रहे हैं। उसके मतलब इट इज कमिंग सो एविडेंट ना। वाइल आई अंडरस्टैंड, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम अ टूर आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई प्लेयर वहां पे अपने फैमिली के साथ कोई हॉलीडे करके आना चाहता था, दैट्स अ फेयर थिंग। बट आई कांट अंडरस्टैंड व्हेन यू आर गोइंग, यू हैव, आप एक, दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू राइट, आई मीन एक बेस कैंप बूट कैंप टाइप होता है, उसके बाद वो खत्म होके नाउ दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ लगेज, 150। मतलब ये डालने की जरूरत क्या थी भाई, 150 किलो बोल रहे हैं, वो 150 किलो के ऊपर, 150 किलो से ऊपर क्या लेके जाएगा, लेकिन लेके जा रहे हैं, इसीलिए उसने डाला है। और इंडिविजुअल स्टाफ किसी का, दे आर टेकिंग स्टाफ फॉर डूइंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड ऑल। तो ये मतलब कुछ पानी नाक के ऊपर से गया है। क्या बोलते हो आप Rajiv, अभिजीत? हाँ। Rajiv, honestly, I didn't feel like I've never read those 10 deadlines. I don't, it's too below my IQ, my level to even talk about. I'll ask you one simple question. Perth we won 1-0. Adelaide, Shubman Gill gets out at 69 for 2. Shubman Gill or I think KL Rahul, one of them gets out at 69 for 2. Virat Kohli comes out and makes a century. Would you shit care whether वो 250 किलो कैरी कर रहा कि नहीं, दो वाइफ कैरी कर रहा कि नहीं, या हॉलीडे कर रहा कि नहीं? Would you care? नहीं नहीं, करेक्ट है। आई मीन टोटल, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ they, ऑफलाइन, मेरे को ऑफलाइन you know, डिस्कशंस में पढ़ना ही नहीं है, लेकिन ये सब है। ये सब no, लिखा हुआ है। yeah, exactly. And this is where I think BCCI has, they are doing like the ECB, like the England Cricket Board, England Football Board करता है. हर चीज का मसाला बनाओ, हर चीज का न्यूज बनाओ, so that they stay in the, this, what is drama? Drama is BCCI has summoned Virat Kohli and Rohit to play domestic cricket. That is nothing but drama. What is important for you and me? Virat Kohli is playing today versus Baroda. That is important for me. कि बस विराट कोहली खेल रहा वर्सेस बड़ौदा, लेट्स सी वो कितना स्कोर बना है. दैट इज एक्चुअल न्यूज, दैट इज एक्चुअल ड्रामा, दैट इज एक्चुअल फैक्ट. बीसीसीआई समन्स इज ड्रामा कि बॉस तुम ऑस्ट्रेलिया से हार के आए हो, ठीक है, दैट्स व्हाई हमने तुम्हें अभी कमांड किया है लाइक अ हेडमास्टर, यू गो एंड प्ले डोमेस्टिक. बॉस इफ एनी प्लेयर इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम, the default understanding is you have to go back to domestic and play and come back, right? That's the clear message. The fact is you don't want to drop these guys because they are your superstars. आपका हेडिंगली 2025 का टेस्ट ऑलरेडी सोल्ड आउट, सॉरी बर्मिंघम 2025 का टेस्ट इज ऑलरेडी सोल्ड आउट. यू डोंट वांट टू ड्रॉप दीस गाइस फॉर द एंटायर इंग्लैंड टूर बिकॉज ऑस्ट्रेलिया टूर में तो रिकॉर्ड क्राउड्स, एवरीथिंग रिकॉर्ड हो गया. तो हम क्या करते हैं, हम अभी ड्रामा बनाते हैं. बॉस यू हैव टू प्ले डोमेस्टिक. अगले ही दिन विराट कोहली का न्यूज आया कि है सम प्रॉब्लम, ही सम इंजरी, ही विल नॉट बी प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट. अगले ही दिन आया है कि वन सच, वो और एक और दो प्लेयर का है कि लोग नहीं खेलने वाला. So the summons and all, they look too headmaster, is too amateurish. सेम विथ कितना वेट लेके जाना है. 7 दिन का टूर, बीवी 3 दिन तुम्हारे साथ सो सकता है, 3 दिन पड़ोस के साथ सो सकता है. ये कैसा, दिस इज नॉनसेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. These things do not matter to me. At 70 for 2 at Adelaide, if Virat Kohli comes out and makes a century,
Huh? We are winning that match and going 2-0 up in Australia. Nothing else matters to you and me. Absolutely nothing else. उसमें अनुष्का के साथ वो पिछली रात सोया है या किसी और की बीवी के साथ सोया है या तीन बीवी के साथ, really doesn't matter to me. And it should not matter to me. In fact, studies have shown, if you see these football World Cups and all, in many World Cups, initially people used to not allow families to travel. But then बाद में फुटबॉल कोचेस ने बोला कि बस ये पूरा साल खेलते रहते हैं दूसरे कंट्री में, ये पूरा टूर करते रहते हैं. फॉर देम the families needed to soothe them, during that 1 month long tournament. So people actually said, wives and all should be there in the tour. It is good. So there are multiple theories contradicting both. But हम लोग क्या करते हैं ना, हमने एक बस, even Anushka going in that entourage is big TRP, is big news for Australian media. Virat Kohli hardly scored anything in Australia apart from 1 century. He was on headlines most days in Australian newspapers. Joker Virat, and some rude Virat. Why? Because उसी से उनके पेपर्स बिक रहे हैं. आज भी फॉक्स क्रिकेट के हेडलाइंस पूरा इसके ऊपर है, इंडियन टीम में ये हो रहा है, इंडियन टीम में बीवी को भेजना मना कर रहा है, बिकॉज उनका तभी तो बिक रहे हैं उनके. So, I think this was totally uncalled for. I have nothing to do with this. If somebody's playing, if you are dropped, the default is you are expected to play in domestic cricket. The day you are playing in domestic cricket, I will follow your scores. बाकी किसने किसको समन किया, कौन किसके साथ सोने वाला है, किसका कितना केजी वजन जा रहा है, किसका कितना डिजाइनर ड्रेसेस, मेरे से कोई मतलब नहीं है. डोंट वेस्ट माय टाइम. राजीव. नहीं, सही है, सही है यार. ये क्लिप का ना छोटा सा ये बना के ना इसको वायरल करना मांगता है. यार बड़ा बड़ा मजा आया. नहीं लेकिन फेयर अनफ, बाय द पॉइंट, बट उसमें एक ही चीज था जो मुझे थोड़ा सा वरिंग लगा. वरिंग नहीं, मतलब अजीब लगा, विच आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, इज नंबर 7 पॉइंट विच सेज पर्सनल शूट्स ड्यूरिंग सीरीज एंड टूर. सो देयर इज ये एडवर्टाइजमेंट और इसके रिलेटेड है ना, 2-3 पॉइंट्स है जो मुझे बड़ा, आई वॉज नॉट रियली कंफर्टेबल. मतलब वो यहाँ पे मैच चल रहा है, वो प्रैक्टिस सेशन खत्म होते ही ना वो उधर नहीं जा रहा, वो कोई एडवर्टाइजमेंट की तरफ जा रहा है ये वो करके. सो ये सब है ना थोड़ा सा. सी, द यंगर प्लेयर्स डिपेंड ऑन ऑल दीज थिंग्स, राइट. सो टीम बन के टीम जीतता है, तो दीज थिंग्स शुड हैव बीन अवॉइडेड. लेकिन आई थिंक कुछ तो इश्यूज हैं जो ठीक है, मतलब जो चलेगा, बट आई थिंक वन. राजीव, हाँ हाँ. these are mega stars. Indian cricketers today are as big as Europe's top footballers. इनके पीछे हमेशा एड्स, प्रेस हमेशा रहेगा. दैट इज द लाइफ. ये डिक्टेट इन्होंने किया, ठीक है, दे शुड नॉट हैव कम आउट इन द प्रेस. आप अंदर ही वो बोल तो दो. वो तो आएगा. एंड कल रोहित शर्मा ने जब बात की है ना, तो व्हाट हैपेंड, माइक खुला रह गया, मतलब उसने म्यूट नहीं किया. तो उसने अगरकर को बोला कि अबे रुक जा, सारे मेरे पीछे पड़े हुए कि ये है क्या करके, मैं जरा सेक्रेटरी से बात करके वापस आता हूँ करके. सो ठीक है, मतलब सी दीज आर ऑल एनीवेज. ठीक है भास्कर, मैं आपके पास आता हूँ. एंड आई वांट आफ्टर दैट फुल शोडाउन में अभिजीत, मैं ये टॉपिक पे वापस आपको नहीं लेके आऊंगा. आई एम जस्ट सेइंग कि चैंपियंस ट्रॉफी का ये जो स्क्वाड है, आपके 3 मैचेस हैं, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान. थर्ड मैच है पाकिस्तान के साथ. सो डू यू थिंक इंडिया हैज अ रियलिस्टिक चांस ऑफ मेकिंग टू द सेमीफाइनल्स उसके बाद, क्योंकि 2 मैच जीतना है. Absolutely, I would be surprised if India don't make it to the semifinals, because probably like uh, forget about what happened in the test arena. मैं बोल आज भी बोल रहा हूँ कि India is probably the one of the best ODI teams in the world right now. I think India is the best ODI team because इतना अच्छा, मतलब we have probably the greatest ODI batsman of all times. We have probably the greatest bowler in the last 100 years playing for us. I think there's no reason why we can't win the Champions Trophy. मुझे थोड़ा बुमराह को लेके डाउटफुल है कि वो खेलेगा कि नहीं Mm-hmm. खेलेगा. एंड दैट्स Mm-hmm. वेयर आई फील, ठीक है, मतलब एनीवेज दे हैव सेड दैट February फर्स्ट वीक में ही उसका इंजरी रिपोर्ट Mm-hmm. आएगा. एंड इफ यू रिमेंबर द लास्ट टाइम यू एंड मी स्पोक, वी सेड कि बुमराह को Mm-hmm. शायद सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन बाद में जो भी होगा वो ऐसा आएगा. सो इट वाज एक्सपेक्टेड. सो See, even if he's going to be available from the semifinals, they're going to keep him, या right? या Because he can make all the difference. Yeah, like he's the difference between a score of 300 and a score of 240, 250, isn't it? But others go at 6, 7 and over. He goes at 2.53 and over. So it just tilts the match in India's favor big time. Like we saw in the World Cup, T20 World Cup final. They were trying to survive Bumrah when the asking rate was 6. They said, okay, we'll play this 12 balls, and then they had to score 30 of 18 balls kind of thing. So I think Bumrah makes all the difference. So even if he's going to play just the 2 games, semi-finals and finals, I'm sure they're going to keep him. And that's why I was a bit surprised why they did not go for an extra fast bowler. Because if Bumrah needs some rest, they would need to play an extra fast bowler. But I think they're going to go with only 2 fast bowlers
in the subcontinent. That's why they have gone only with three fast bowlers, just one extra fast bowler in Mohammad Shami. Arshdeep and Bumrah are technically supposed to start, with Shami being the backup. So if Bumrah doesn't play, probably Shami will play, with Hardik playing all the games. So that's how it looks like. Yeah. Rajiv. And then I also think that they'll. So कैसा playing 11 होगा, कैसा squad बनेगा? I think that we can discuss once the England series starts and we know how the squad is shaping up. But I think 8 बैटर तो होगा, क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप में देख लिया इन्होंने. 8 बैटर makes a big difference for them. In that Akshar Patel in that final made the difference. Right? So वो तो खेलेगा ही खेलेगा. Now the last few minutes which we have. So the only thing which I really wanted to speak about, or rather, Rohit Sharma was, उसको ना मतलब PR, मतलब बहुत कुछ बोला गया उसके ऊपर ये वो करके, बट इज कम बैक एज द कैप्टन एंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जो भी है, मतलब ठीक ही लगा मुझे. सो हाउ मच ये चैंपियंस ट्रॉफी दाव कितना लगा उसके ऊपर कितना दाव है? इवन विराट कोहली ऑल्सो. अभिजीत आप पहले ले लीजिए, और थोड़ा टाइम आज भास्कर को प्लीज दीजिए आप. It's a lot, a lot mainly for the background, because what happened versus New Zealand and versus Australia, I think a lot is riding on Rohit Sharma and Virat Kohli. I am not very positive how the tournament will. I don't think India are certainties to reach the semi-finals. Bangladesh is a team which every team will beat, so let's cut out Bangladesh. It will be come down to between Pakistan, New Zealand, and India. Between Pakistan, New Zealand, now India had lost to both these two teams in the T20 World Cup in 2021. However, those matches were very skewed with in the toss. जो toss जीत रहा था, वही second bat कर रहा था, वही आराम से जीत रहा था. So I don't know how this will shape up. But yeah, on Rohit Sharma, Virat Kohli, a lot depends. If this team doesn't reach the semi-finals, it could be in serious issues for both of them. Although in white ball, it should not be, because they are legends in white ball, and they have a good history and they have good backing. So yeah, but a lot rides, especially with what happened in Australia and versus. So one thing which I wanted to tell is that Asia Cup Dubai में 2017 में under Rohit's captaincy we had won. हम जीते हैं 2018 में, sorry. We have won that Okay. cup. So what do you say, भास्कर, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, वही कह रहा हूँ कि मतलब forget about Test cricket. Test cricket is a different ball game altogether. We have seen so many great players struggle in Test cricket. Yuvraj would go and fail in Test cricket and then come back and win a World Cup for India. So I think Yuvraj, we've seen play for 10 years, tried to become a Test cricketer, never happened. But at the same time, he would come and just play brilliantly in ODI cricket. So I don't think we should look too much into the failures of what happened in red ball cricket. These are all like white ball is like the bread and butter. I think they would all come and play brilliantly. That's what I feel like. Rohit Sharma is the only worrying factor, because I think you can see him declining as a sportsman, as a cricketer, because he's aging, right? He's 37, 38. So it's not just about his form or anything. It's a natural aging process which body goes through. So I think that's where I feel Rohit Sharma, you might see a underwhelming performance by Rohit Sharma, but I don't think that's going to affect too much, because even if he scores a quick 5, 25, 30, I think the other players can, if at all, like the World Cup final, he was in good form, but he threw it away. But for that, I don't think any of the players will have too many problems scoring reasonably good scores. So if India bat first, score close to 300, and with Bumrah playing, I think it's a no-brainer. India is going to be the favorites. By the way, Dubai में chasing is the best option. जो ड्यू पड़ता है ये सब, chasing is a very very good option.